Very good evening, everyone. I hope you all are doing very well. Please let me know. Am I audible or not, guys? Please let me know. Okay, I think I am audible to all of you guys. And thank you to all of you guys for joining into this bootcamp. Today, we are going to learn about some basics of web development using HTML, CSS, and JavaScript, right? And also, the very important thing is after completion of this bootcamp, you will be able to collect a free certificate for attending this bootcamp, right? So also you have to fill up an attendance form, which I will give you during this bootcamp, right? So stay tuned for the form, guys, and just keep learning. Okay. Okay. I think you all know about HTML, CSS, and JavaScript, right? We use HTML for creating a skeleton, like a human body. When a human body is being created, the skeleton is a very basic thing that everybody needs, right? So without skeleton, a body cannot be created, right? And after the skeleton, also the blood, muscles, also the styling portion, right? Like your hair, goggles, t-shirt, pant, shoes, those things also very important, right? Without those things, we cannot go outside, we cannot go anywhere. So those portions are nothing but CSS. CSS gives you some beautification in your body, right? HTML just provide you a basic structure of your body, and CSS provides you some styling, okay, that makes you beautiful. And JavaScript, most important thing is the JavaScript. Without JavaScript is like a human body without its brain, right? Means there is a car, but that car cannot be driven. Means उस कार को हम drive नहीं कर सकते. That kind of things is a JavaScript. Like if you want to eat, or if you want to walk, or if you want to perform some operation, for that you have to implement the JavaScript on a web page. So I hope you have understood the basic things of HTML, CSS, and JavaScript. Please let me know in the comment box, guys, have you understood or not? Otherwise, I will explain these three things once again. There's no problem, guys. Please let me know. And we also create a very small web page for implementing HTML, CSS, and JavaScript for the understanding purpose. Okay, that code will not be very much difficult. Anyone can understand that code. Okay, are you guys interested for this bootcamp or not, guys? Please let me know in the comment box. Please let me know, everyone. And if you like this, if you love this bootcamp, then don't hesitate to subscribe and like our channel. Okay, guys, and also don't forget to share with your friends group, also your college group. Okay. Okay, just let me know, guys, whether my entire screen is visible or not. Okay. Are you able to see my VS Code, guys? Please let me know. I think my VS Code is visible to all of you guys, right? And one more thing, guys, please let me know. If I continue this bootcamp in English, then there is a problem or not, guys? Or you are very much comfortable in Hindi? Just let me know, guys. So if you tell me to continue this session in Hindi, then there is no problem.
Okay, I think the mixture of Hindi and English will be very much comfortable for all of you guys, right? सभी को थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश दोनों ही आता है, राइट? ओके, तो मुझे लगता है हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ना अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत बेसिक देख लेते हैं। ओके, वी आर गोइंग टू लर्न सम बेसिक्स अबाउट HTML. ओके, so I will create a very first HTML file and I have just give a name. मैंने एक नाम दिया इसको index.html, right? Also, the very interesting thing in a VS Code that VS Code also provide you a boiler template for writing an HTML, right? So the boilerplate is like just put this exclamation mark, then it will give you an entire boilerplate, like this kind of boilerplate. So there is a doc type HTML which basically defines the browser that this file is an HTML file. Okay, the HTML, this is the HTML tag, right? This is the heading tag, head, and this is a body tag. And inside this, there are a couple of meta tags are present here, and also there is a title tag. These are the basic things, right? Okay, let's change the title. But before changing the title, let's open this HTML into our browser. Okay, in the browser, you can see here the page name is a document, right? I think you all see that the page name is a document. Okay, let's change the name of this page, like Web Dev Bootcamp. Okay, now I have changed the title into Web Dev Bootcamp. Let's see what happened in the browser. Here you can see also the name of the web page has been changed. That means we are able to change the title name, right? Okay, now in HTML, we can write headings. There are multiple headings are there. You all know that headings from heading 1 to heading 6, right? Like heading 1, hello, and this way I can change it like heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, also the heading 6, right? And here you can see all the headings are displayed here, right? These are the basics of heading. Okay, now let's talk about another block level element, which is called a paragraph. Okay, and I will also tell you what is a block level element or what is inline element. Don't worry. Okay, just let me off my tab 9 and okay, the paragraph, and let put some text inside the paragraph. So VS Code provides you the concept of LODM. LODM is a abbreviation. It will provide you some random text. Like I need 50 words. So I will write LODM and after that 50. So it will give you 50 random words. And let's see what happens. You can see you are able to see the paragraph here, right? Please let me know, guys. Are you understand? Have you understood these things or not, guys? These are very basic things. Please let me know, everyone. I hope you have understood. Okay, here is another tag which is called the span tag, and this span is an inline element. Okay, like Wave Dev Bootcamp, and also create another span tag here by CodeXIntern, and let's see what happened in the browser. So if I open the browser and let me zoom in, you can see the Web Dev Bootcamp. This is another span tag, and the by CodeXIntern, this is another span tag, but it display side by side, right?
it makes a single sentence like Web Dev Bootcamp by CodeXIntern. Okay, but if I write these two things using normal paragraph tag or using normal heading tag, then let's see what happened. Just let me change. Okay. First of all, let me change the span into P. Okay, and let's see what happened here. Here you can see now the by CodeXIntern, this portion is now present at the bottom position of the Web Dev Bootcamp. Okay, now a question, एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि सर आपने यहाँ पर स्पैन टैग लिखा है, दो स्पैन टैग, वो भी लाइन नंबर 18 और 19 पे, लेकिन वो दोनों डिस्प्ले हो रहा है एक सिंगल लाइन पे, राइट? बट आप अभी दो पी टैग को लिखे हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग लाइन में क्यों डिस्प्ले हो रहा है? दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी अराइज्ड इनटू योर माइंड, राइट? प्लीज लेट मी नो गाइस, हैव यू this question is in your mind or not? Please let me know. I will discuss why this has happened here. Please let me know, everyone. Okay, the very basic thing, let's understand why it is happening here. Let's suppose it is your browser window, okay, and you are writing a paragraph tag. Let's suppose you are writing a paragraph like there's a P and here is another paragraph closing tag, right? And here you have writing the Web Dev Bootcamp. Okay, you can see here this paragraph tag just takes this much of portion, just only this much of portion it has been taken, right? But this remaining area is still empty, right? And also we have written another p tag here in this way, and here by CodeXIntern, okay, and it also takes this much of portion, and this remaining portion is also empty, right? But this paragraph will not be displayed in this area. Why it is happening? It's because p tag is a block level element. Block level element means, ब्लॉक लेवल का मतलब यह होता है कि अगर मान के चलो कि पी टैग, अगर एक पी टैग को हमने यहाँ पर लिखा है, अगर वो इतना स्पेस ऑक्युपाई करके रखा है ना, तब भी हम कोई भी और टैग को इस पोजीशन में डिस्प्ले नहीं करवा सकते. ये पूरा का पूरा विड्थ इस पी टैग का है अभी, राइट? दिस इज कॉल्ड द ब्लॉक लेवल एलिमेंट. कि वो जितना भी पोर्शन ले, अगर मान के चलो कि ये पैराग्राफ टैग ये इतना पोर्शन लेता है, ठीक है, और रिमेनिंग इतना पोर्शन अभी भी एम्प्टी है, तब भी हम कोई और पी टैग या स्पैन टैग और हेडिंग को हम यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करा सकते, राइट? सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज इनलाइन एलिमेंट. Inline element means, suppose you were displaying a span tag here, so the span tag will take this much of portion, right, of your browser, and this remaining portion will be still empty, right? Still empty. Now if you want to place another span tag in this position, then there will be no conflict between दिस टू स्पैन. क्या है ना, अगर आप एक स्पैन के बगल में एक और स्पैन को लगाना चाहते हो ना, तो लगा सकते हो, क्योंकि एक इनलाइन एलिमेंट है. इनलाइन एलिमेंट ओनली टेक दैट मच ऑफ पोर्शन व्हिच इज नीडेड फॉर डिस्प्लेइंग ओनली फॉर दैट एलिमेंट. सो इट विल टेक ओनली दिस मच ऑफ एरिया, एंड रिमेनिंग दिस मच ऑफ एरिया, in this area we can display another inline element, right? But we cannot display a p tag here or a heading tag here. We can only display a span tag, right?
Please let me know, guys, have you understood or not what is the concept of block level element and what is the concept of inline element? Please let me know, guys. I hope you have understood what is a block level and what is inline element. Okay. And also we have some another special tags we can use for providing some better condition to our HTML. Like suppose you want to make this much of portion bold. Okay, you want to make this much of portion bold, so you can use a B tag. Okay, so if you use the B tag and if you go to the browser, you can see this much of portion is very much bold, right? So using B tag you can bold this area. Otherwise you can use the strong tag. There is no difference between B tag and strong tag, but there is also a difference, not a very serious difference. If you see, it looks similar, but if you add any screen reader on this web page, then it will affect for explaining about all these things. So just this is a difference between a B tag and a strong tag. It will emphasize. If you use a B tag, then a screen reader will emphasize this much of portion. Okay, suppose you want to make this much of portion italics. Okay, so you can use I tag. Okay, and let's see, here you can see this much of portion is now in italics. Clear, everyone? Please let me know, have you understood or not, guys? Please let me know, clear or not. I hope you have understood, guys. Okay, suppose you want to add a strike on this much of portion. Okay, strike means, suppose here is a sentence like web dev bootcamp by CodeXIntern. Okay, suppose this is a sentence and you want to add a strike on this sentence, means you will just add this kind of line. Okay, this will called a strike. So if you want to add a strike, you just copy that portion, you will copy that much of portion and you can use the strike and just paste the text, and let's see what happened. Here you can see a strike is now being placed on this much of portion, right? So this is the basic strike. Suppose you want to put an underline, how you can do that? Just copy that much of portion and use the U tag and paste it, and let's see what happened. Here you can see a underline is now being displayed here, right? So these are some basic things, and also there are some basic things like input, button. These are some basic things like login. Okay, so in this bootcamp I will not going to tell you about each and every tag. Okay, I will just give you a taste of HTML, CSS and JavaScript. And also you can create tables and another things. You can also displaying some images, and also how you can displaying some image, you can use the img tag, and on this img tag inside the source you can provide a valid destination of an image, or you can also put a URL of an image for displaying that image, right? So let's suppose I want to display another image like HTML, and let's suppose I want to display this image onto my website. So just let me copy the image
address from here, and if I put it inside the src, and if I go to my browser, and you can see here the HTML is now being displayed onto my website. So in this manner, you will be able to display any image on your website. And suppose any image is present in your local storage, then you will also be able to display that image, right? Okay, I think you have understood these basic things, right? Just put a comment into the comment box, guys, that you have understood. And after that, we will create some input, some buttons, and after that we will also add some CSS, some JavaScript on it for the functionality purposes. Please let me know, guys, have you understood or not? Okay, just let me remove the body from here and add another body. Okay, I hope you have understood all the things, guys. Please let me know. आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? बताइए एक बार। और अगर आप लोगों को ये बूट कैंप अच्छा लग रहा है तो एक लाइक, एक कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? ओके ओके, अभी हम क्या बिल्ड करेंगे, एक सिंपल चीज को बिल्ड करेंगे। लाइक सिंपल क्या है सर, बताइए। सपोज इट इज एन वेब पेज, राइट? एंड एट द सेंटर पोजीशन देयर विल बी अ div, ओके? बीच में एक div होगा। Oh, thank you, Kedar. Okay, and here will be an input field, and also another input field will be present here. Okay, there will be a button at the bottom position of that div, and the text will be like uh, submit. Okay, and in this field you will put your email. It will be your email, and here you will put your password. And you can told me, आप लोग मुझे बोल सकते हो सर ये तो बहुत ही एक बेसिक थिंग है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने का फायदा क्या है? देखिए, फायदा तो एक ही है कि आप लोग को थोड़ा टेस्ट मिलेगा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अभी बता सकते हो कि सर जावास्क्रिप्ट कहाँ है? तो आपने तो you were just displaying the only HTML and CSS, but where is the JavaScript, sir? So JavaScript is like, if you don't put any email or password, and without putting those fields, if you click on this button, then some message will be displayed here at this position, in this area. Some alert will be displayed here. Okay, suppose आपने ईमेल नहीं डाला है और आपने सबमिट कर दिया, लेकिन आपने पासवर्ड डाला है, सबमिट कर दिया, तो उसमें क्या डिस्प्ले होगा कि ईमेल शुड नॉट बी एम्प्टी। या आपने पासवर्ड को नहीं डाला तो क्या डिस्प्ले होगा? पासवर्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। लेट्स सपोज you have put the password, but the password length is less than 8. So on that time, there will be a message will be displayed like the password length will be more than 8, right? So for implementing this basic feature, we will use the JavaScript, and we will not talk about the very basic data type. We will use the DOM properties here, means document object model. Okay, understood everyone? Okay, let's create this thing, guys. First of all, I need a style, means style.css. Just keep in your mind, guys, you can use three type of CSS. Okay, three type of CSS. Like there's a paragraph tag and lorem 10. Suppose you want to add the text color. Okay, you want to add the text color on this paragraph tag, so you can use the style property here and use the color, and let me choose the color like red, which is not good, but let's take the red and let's see what happened in the browser. Okay, I have not. Okay, just let me
close the port. Okay, now you can see the text color is now being changed into red, right? So you can add CSS in this way. This is called nothing but the inline CSS. Okay, this is called the inline CSS. Let me copy this much of portion from here, and in the Excel draw, let me paste it here. Okay, let me just, okay, this is called inline CSS, right? Okay, we can also add CSS in another manner, like in the after the title you can use the style tag, and in this style tag, let's suppose you want to add a class name here like paragraph. Okay, and inside the style tag, if you want to target a class, then you have to put a dot first, right? And let's suppose you want to target an ID, then you have to put a hashtag. Okay, so here I want to target a simple class, that's why I have to put a dot first, after that the class name, and I want to just give a style like color will be red to this paragraph. And let's see what happened here. Here you can see the text inside the paragraph, the color is now being changed into red, right? So this is another way to put CSS, and this is called internal CSS. Okay, this is called the internal CSS. And if you write the CSS inside the paragraph tag, then it will be called as a inline CSS. But we are not going to follow the internal CSS and also the inline CSS. Instead of using these two things, we will try to use the external CSS. What is external CSS? In external CSS, you will create a CSS file externally, and you just put a reference of that file inside your HTML page, right? In this manner. So this is called the external CSS. Okay, please let me know, guys, have you understood the concept of inline CSS, uh, internal CSS and external CSS or not? Please let me know, guys, have you understood or not? आप लोगों को समझ में आया? बताइए एक बार, everyone. I hope you have understood all the things. Okay, let's remove the paragraph tag from here and also this portion from here. Okay, and let me open the first of all the style. Let me choose the universal selector. Here this star is nothing but an universal selector. अटेंडेंस बाद में हो जाएगा, चिंता मत करो अटेंडेंस के लिए. अगर कुछ सीखना है तो सीख लो, अगर अटेंडेंस के लिए बैठे हो तो जा सकते हो भाई. ओके गतियान, ओके जस्ट स्पैमिंग करना मना है भाई. ओके गाइस, डोंट स्पैम इन द कमेंट बॉक्स. अगर आपको कुछ सीखना है तो सीखिए. अगर आप अटेंडेंस के लिए आए हैं सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए, तो ये जगह आपके लिए नहीं है. सर्टिफिकेट भी मिलेगा लेकिन सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल I have to remove the entire padding and margin from the HTML page. So for that, I will add padding 0, also the margin 0, and I will use the box sizing border box. Means it will help you to maintain your entire web page as a box. So for that, I have to use the box sizing border box, right? Okay, just let me put it here. Okay, now it looks good. Okay, now let's create a div, and suppose let me give a name like
main container, and I want to provide the entire height and entire width of my screen to this div. So how can I do that? अगर आपको आपका जो एंटायर जो स्क्रीन है ना उसका हाइट और विड्थ असाइन करना है इस div को, तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है. जस्ट कॉपी द क्लास नेम, and I have already told you how you can target a class name. Just put a dot and paste the class name here in the CSS. So in this way you can target a class. And now आप क्या चाहते हो? थोड़ा height और थोड़ा width देना. So just choose the height, and height I want to provide the 100 viewport height. Also the width 100 VW means viewport width. And let me see what happened, whether the entire height and width has been assigned or not. How can I assure that? Just let me put a background color like black, and let's see what happened. Here you can see this div just taken the entire height and width of my screen. If you want, you can use pixel, but that is not very much appropriate. If you want to provide the entire height and entire width of your screen, then you should use the VH and VW. Okay. अब बॉर्डर से ज्यादा समझ में नहीं आएगा. अगर थोड़ा सब कुछ अगर ब्लैक ब्लैक होगा ना, अच्छे से दिखेगा. हाँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक. यस. अच्छा, अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हाइट 100 VH एंड विड्थ 100 VW का मतलब क्या है. ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं पहले. तो मैंने लिखा है यहाँ पर हाइट 100 viewport VH and also width is 100 VW, right? And let's suppose it is your screen, okay, and it is your div, right? आपने क्या चाहा कि आप चाहते हो कि इस div को आप अपने स्क्रीन का पूरा हाइट देना चाहते हो. तो अगर आप 100 viewport हाइट लिखोगे ना, तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस होता है ना, उतना पूरा का पूरा हाइट आप उसको असाइन कर दोगे. इसका मतलब है 100 viewport height, okay, 100 VH. Let's suppose you want to assign the entire width of your screen. So for that you have to write the 100 VW, and if you write the 100 VW, that means you are going to assign this much of portion, okay, basically from here to there. This much of width you are going to assign into this div. That's very simple. That is the concept of 100 viewport height and 100 viewport width, right? यस, पूरा का पूरा स्क्रीन का जो हाइट विड्थ है वो उसको ले लेगा. सिंपल है. ओके, इसको ब्लैक से थोड़ा अलग कलर देते हैं. इसको ग्रे ठीक रहेगा? ग्रे तो ठीक नहीं रहेगा. ऐसा कुछ कलर ठीक होगा. अभी ठीक ठाक है. आफ्टर दैट आई विल create another div, okay, and I will give the class name of that div will be the form container, okay, and I will not going to assign any height or width on this div, okay. And why I will not assign? It will be displayed, don't worry guys, okay. First of all, I have to add an input, and the input will be type will be email. Also the ID will be email. Also I will add another input. The type will be password, and ID, let's suppose, will be password, and here will be a button submit, and text will be submit.
ओके, आई थिंक मैंने इतना जो 3 लाइन लिखा है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। मैंने एक इनपुट लिया है बेसिकली, इस इनपुट का टाइप मैंने डिफाइन किया है ईमेल। दूसरा मैंने एक और इनपुट लिया है और इसका भी टाइप मैंने डिफाइन किया है पासवर्ड। और आखिर में मैंने एक बटन को लिया है, जस्ट आई हैव जस्ट टेकन अ बटन एंड द टाइप ऑफ दैट बटन इज अ सबमिट। एंड मेनी ऑफ यू can told me that, sir, you were just assigning a name like a form container, but you have not create a form inside the div. Then how you can send the data, or how you can manipulate or operate, perform any operation on the data? Don't worry, for performing that kind of operation we have JavaScript, right? So using document object we can also access these inputs or these buttons. Don't worry. Okay, now let's see the display. Okay, now it does not looks good. I want to display these things at the center position, as I already told in my Excel draw, right? This will be displayed at the center position. Type means it will just define that what type of data you are going to put here. Like you are defined email, that means you have to put a valid email. And हाँ, नो प्रॉब्लम, अगर तुम बटन में टाइप डिफाइन नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलो हटा ही देते हैं टाइप को यहाँ से। मान के चलो टाइप यहाँ पर ईमेल है ना, तो इसका मतलब तुम यहाँ पर एक वैलिड ईमेल डालना पड़ेगा, अदरवाइज तुम सबमिट नहीं कर पाओगे। अगर पासवर्ड है ना टाइप, तो क्या होगा, अगर तुम यहाँ पर कुछ भी डालोगे ना वैल्यू, देखोगे थोड़ा डॉट 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 दिखाएगा। तो यही है बेसिकली टाइप, और कुछ नहीं है, बस डिफाइन करता है कि कैसा डेटा तुम डालोगे इसके अंदर। Okay, first of all, let's target this form container. Okay, and I want to add a display flex, and also the flex direction will be column, right? Let's see what happened. Okay, I have not assigned any height or width on this form. Okay, just give me a second, guys. Okay, let me assign some height and width. First of all, I have to target the this input fields, right? So I will directly target this because there is no other input fields present here, right? So I want to assign the height will be like 30 pixel, width will be 250 pixel. Let's see what happened. Okay, 100, yes. Now it looks good, but the button is also takes the entire height, width. So I will also target the button here. I will assign the same height, 30 pixel, and also the width will be 250, right? Okay, now it looks good, and let add some gap between them. So how can I do that? So I will use the row gap, and let's suppose 10 pixel. Okay, now you can see there is some gap between this two input field and also the button, right? Pretty much easy. Now I have to center this much of a portion center, right? I have to put this into the center. How can I do that? That is very easy. Just add the display property flex, and also add the justify content center and align item center. Now I have to put those styles into this parent div, because inside this parent div all the things are present. So I have to display these things at the center position. So for that I have to flex the display on this main container. So I have to go inside the main container, and here I have to write the properties like display flex, align items center, justify content will be also center. Okay,
and let's see what happened. Now you can see this is two input, and also the button is now being present at the center position, right? So using the flex properties, you will be able to center anything, okay, inside a div or inside your entire screen. अगर आप फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज करोगे ना, तो आप किसी भी चीज को सेंटर में पोजीशन लगा सकते हो। और ऐसा भी कर सकते हो लाइक मार्जिन उसका ऑटो कर दो, तो भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को, बताओ एक बार। फ्लेक्स प्रॉपर्टीज को यूज करके तुम किसी भी चीज को सेंटर कर सकते हो। हाँ दे देंगे, चलो दे देते प्लेस होल्डर, नो प्रॉब्लम। प्लेस होल्डर, एंटर email, let's copy this portion, like enter password। ठीक है ना, अभी enter email, enter password, now it looks good, okay। Okay, now let me just remove the border, oh, not this thing, border will be none, and also I don't want any outline, will be none। And what is outline, guys? There's nothing. Outline means if you click on this input field, then a dark border will be displayed here, right? So that dark border is nothing but the outline, okay। Let me add some padding, like input padding left will be 5 pixel, also the padding right, let me put also the 5 pixel, okay, and let's see what happened। Okay, now if you write anything, then it will take 5 pixel from the left position, right? So it looks good now, okay। So we have already structured these things, right? So now let's add some JavaScript for its functionality. Let's put some JavaScript here, right? Okay, sir, different between outline and border, okay। Let me show you. Suppose it is your button, or it is your input, right? So the border means if you don't click on this input field, okay, if you don't click on this input field, अगर आप इस इनपुट फील्ड के ऊपर क्लिक नहीं करोगे ना, तब भी ये बॉर्डर आपको विजिबल होगा, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है और आपने इसके ऊपर क्लिक किया, तो एक क्लिक करने के बाद एक ब्लैक बॉर्डर ऑटोमेटिकली आ जाएगा इसके ऊपर, तो वो चीज आउटलाइन कहते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आप क्लिक करेंगे उसके बाद अगर कोई बॉर्डर यहाँ पर डिस्प्ले हुआ या कोई लाइन यहाँ पर डिस्प्ले हुआ, उसको हम आउटलाइन कहेंगे। या अगर हम क्लिक नहीं करेंगे तब भी अगर कोई आउटलाइन डिस्प्ले होता है, तो उसको हम बॉर्डर कहेंगे। थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन यही है इसका डिफरेंस। क्लिक करने के बाद अगर कोई डिस्प्ले होता है तो उसको हम आउटलाइन बोलेंगे, अगर क्लिक नहीं करेंगे तो भी डिस्प्ले होता है तो उसको हम बॉर्डर कहेंगे। और मैं दोनों चीजें को ही नहीं चाहता हूँ, तो उसको मैंने हटा दिया, okay। Now let's add some JavaScript, okay। How you can add some JavaScript? Just open a script tag here and write your JavaScript, there is no problem, okay। How to claim the certificate? That is a very good question, Praveen। You have to watch the entire bootcamp first, and after that I will give an attendance form, okay, an attendance form, and you have to fill up, anyone have to fill up that form, and after that
you will be able to collect your certificate, but it will depend on me when I will give the form. Okay, हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पर यूज नहीं करेंगे ऐसे, और we will create a script file externally like script.js. Okay, and let let me put it here, and we will assign that script at the bottom position in this manner. Script, after that src means source, and inside the source you will just put the destination of this script file, right? And let's see what happened, whether the file has been this file has been connected or not. So let me console log here, hello world, and go to our browser and let me open the inspect mode, and in the console let's see what happened. There's a hello world. That means our JavaScript is working perfectly, right? There is no issue. Okay, and also guys, you don't need to install the Node.js runtime environment for the web development, because in web development means if you are going to use normal HTML, CSS and JavaScript, then you don't need to install the Node.js, because your JavaScript code will automatically be executed on the browser. But you are going to use React or Vite bundler, on that time you have to install the Node.js runtime environment. Okay, now I have already told you that I will not going to show you what is the data type or what is object or anything, because those are very basic things. Now let's suppose I want to target this button. How can I do that? I want to target this button using JavaScript. Okay, so for that I will add a class name here, and I will name it as a button, and I want to target this button. How can I do that? That's very easy. In JavaScript, we have an object, have an object called document. Okay, so this document object, using the document object, you will be able to target any element on any HTML page. Okay, you will be able to target any kind of element. So there are a couple of options for targeting element. You can use get element by ID, or you can use query selector, but I will prefer to use query selector, because inside the query selector you can pass class name, also the ID, also the direct element you can pass here. So I want to add the button, so that's why I will target this btn, and just because it's a class, so I will put a dot here, and after that btn, right? And let me store the reference of that button inside a variable like a const button equal to the reference, right? And let me add some events on that button, like button dot add event listener, and what type of event I want to perform. Let's suppose if I click on this button, then something will be happened. That means the click event. So I want to use the click event here, and after that it will also take a callback. Now what is callback? Callback means function inside a function. Suppose you have create a function called function greet, and if this greet function also take an argument as a function, then this will call a callback. Okay, so this is a callback basically. Now first of all, let's assume I have the access of event. Okay, the very first thing I have to add e dot prevent default. Okay, now you can ask me, sir, what is e dot prevent default? Did you understand what is? Okay, suppose I have used e dot
prevent default. That means if I press that submit button, then suppose any data I have received through the JavaScript, then there may be a possibility that the data will be sent an another page or any another source or any another server, right? So for preventing that situation means मुझे वो डेटा नहीं भेजना है भाई, उसको रोको, तो उस चीज के लिए मैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट को यूज करूंगा। ठीक है, समझ में आया सबको? मुझे उस डेटा को कहीं पर भी नहीं भेजना है, किसी यूआरएल पे नहीं भेजना है, किसी अलग पेज पे नहीं भेजना है। तो उस सर्टेन थिंग को अचीव करने के लिए हम यूज करेंगे प्रिवेंट डिफॉल्ट, राइट? प्लीज लेट मी नो गाइस, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट व्हाट इज ए डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट? प्लीज लेट मी नो एवरीवन। And suppose if I click on this button, then an alert message will be displayed like welcome. Okay, suppose if I click on this button, then an alert should be displayed here. Let's see what happened. If I click on the button, submit button, then you can see the alert here, welcome. If I again click on the submit button, you can see the welcome here, right? That means we have successfully targeted our button. Pretty easy. Now let add some another references. Like अभी मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा ना, तो जो भी डेटा मैं इस फील्ड के अंदर डालूंगा वो डेटा मुझे मिल जाए। If I click on this submit button, then whatever data will be present, this input fields will be received at my side or the JavaScript side. So how can I do that? Simple. I will target this input, these two inputs. Similarly, like const email, and I will take the document dot query selector. And here you can see how can I target this email. You can see there is an ID called email, right? So I will just copy the email and I will put a hashtag here, and after that I will put a value. Pretty easy. And also I will copy this line and I will change it as the password. Okay, so we have successfully targeted this input, these two inputs, right? Okay, now just console log these two things, guys. First of all, the email, and also I want to console log the password, and let's see what happened, guys. Okay, if I put any email here and also some password, and if I click on the submit button, here you can see the data is now being accessible in the terminal or the console, right? That means we have successfully collect those references. ठीक है, समझ में आया सबको कि कैसे हम किसी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं या कैसे उसका रेफरेंस को हम कलेक्ट कर सकते हैं? समझ में आया सभी को? यूजिंग जावास्क्रिप्ट. This is a DOM property, guys. Okay, the document object model. Please let me know in the comment box, guys. Have you understood these things or not? Using JavaScript, you will be able to collect the references. Okay. So हमने क्या किया? रेफरेंस तो हमने कलेक्ट कर लिया और उस रेफरेंस से हमने वैल्यू को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया डॉट वैल्यू लगा के, राइट? सो अभी हमें चेक भी तो करना है ना कि मान के चलो कि मैंने ईमेल में कुछ भी डाला ही नहीं है, तो उस केस में सबमिट ऑपरेशन परफॉर्म तो नहीं होना चाहिए ना. कैसे करेंगे? सिंपल है, एक इफ लगा लो भाई और ले लो ईमेल को, उसको ट्रिम कर लो एक बार, और ट्रिम करने के बाद चेक करो कि क्या वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है या नहीं. अभी आप लोग मुझे पूछ सकते हो, सर व्हाई यू हैव पुट दिस क्वेश्चन मार्क हियर? यू कैन आस्क मी, राइट? पूछ सकते हो ना. एक ही मतलब है, अगर मान के चलो कि इस ईमेल फील्ड के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है ना, तो ये वाला स्टेप क्या होगा? एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो उसके लिए हमने बस एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया.
और let me suppose I have to add another thing like it may be a null or it may be a undefined. Okay, and सपोज अगर ईमेल मैंने नहीं डाला है ना, तो मतलब क्या है, वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, या नल हो सकता है या अनडिफाइंड हो सकता है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम एक अलर्ट दे देंगे। मैसेज क्या लिखेंगे कि ईमेल शुड नॉट बी एम्प्टी, प्रीटी इजी। और हम क्या करेंगे, यही पड़ी एग्जीक्यूशन को खत्म कर देंगे बाय राइटिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। इसके आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लाइक अगर मान के चलो यहाँ पर मैंने कंसोल लॉग करके रख दिया कि एग्जीक्यूट, और लेट्स सी व्हाट हैपेंड। सपोज मैंने ईमेल कुछ डाला ही नहीं है और मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा ना, तो देख सकते हो एक अलर्ट आ चुका है, ईमेल शुड नॉट बी एम्प्टी। और देखो कंसोल पे कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं हुआ, ये मैसेज एग्जीक्यूट मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या, ईमेल एम्प्टी है, तो यहीं पर ही एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दो। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। सिमिलरली हम चेक करेंगे पासवर्ड को। इफ पासवर्ड को हम क्या कर लेंगे, ट्रिम कर लेंगे और चेक करेंगे क्या वो एक एम्प्टी है या नहीं है, या नल या अनडिफाइंड। अगर होगा ना, तो हम अलर्ट जारी करेंगे। क्या लिखेंगे, पासवर्ड should not be empty, pretty easy. Also we will add a return statement here। ठीक है ना, कि अगर पासवर्ड हम नहीं डालेंगे तो यहीं पर ही एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा और एक मुझे अलर्ट मैसेज मिल जाएगा कि पासवर्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, ओके, लेट्स सपोज मैंने ईमेल डाल दिया यहाँ पर और मैंने कोई भी पासवर्ड नहीं डाला है, और मैंने अगर सबमिट बटन पे क्लिक किया ना, तो देख सकते हो कि पासवर्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। So you will receive an alert message like password should not be empty. Or let's suppose I have put some spaces. Okay, this is not value, guys. This is some spaces. And if I click on the submit button, still it will told you that password should not be empty because you have put the empty spaces, right? Okay. Now, suppose I have put the email and also put the password. And let's suppose the password, I think the password length is 7, right? So अगर पासवर्ड का लेंथ 7 होगा ना, तो वे एक्सेप्टेबल नहीं है। मिनिमम 8 होना चाहिए इसका पासवर्ड का लेंथ। तो हमें उसको भी इम्प्लीमेंट करना होगा। कैसे करेंगे, वो भी इजी है। इफ ब्लॉक ले लेंगे, पासवर्ड को उठाएंगे, डॉट लगा के उसका लेंथ चेक करेंगे हम। ठीक है, अगर उसका लेंथ लेस देन 8 होगा ना, उस केस में हम क्या करेंगे, एक अलर्ट दे देंगे कि पासवर्ड should be at least 8 characters long, और रिटर्न कर देंगे हम इसको। ठीक है ना, इतना सभी को समझ में आ गया ना, कि अगर पासवर्ड जो फील्ड है उसका वैल्यू, अगर उसका लेंथ का वैल्यू अगर लेस देन 8 होगा ना, तो उस केस में हमें एक अलर्ट मिल जाएगा और एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। लाइक ईमेल ले लिया और 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैंने सबमिट पे क्लिक किया ना, so you can see here the message password should be at least 8 characters long. That means all the sanitization that I have put in my JavaScript is working perfectly, right? And एक और important चीज guys, यहाँ पर देख सकते हो ना कि मैंने जो if ब्लॉक लगाया है, जो सैनिटाइजेशन मीन्स जो भी ऑपरेशन मैंने यहाँ पर चेक किया है, ठीक है, परफॉर्म किया है मैंने, वही हम बैकएंड पे भी लिखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट से हम बैकएंड भी लिख सकते हैं नोड.जेएस और एक्सप्रेस को यूज करके। और वहां पर तुम ऐसे ही चेक्स लगाओगे कि भाई अगर तुमने ईमेल नहीं डाला है ना, तो उसको कैसे चेक करोगे। पासवर्ड अगर तुमने नहीं डाला है तो तुम उसको कैसे चेक करोगे, बस ऐसे ही चेक कर लोगे यार, कोई डिफरेंट चीज नहीं है। ऐसे ही हम बैकएंड को लिखते हैं। और इन
जो चीज़ों को हमने लिखा है ना, उसको नथिंग बट हम क्या कहते हैं, एक कंट्रोलर कहते हैं। और कंट्रोलर बोले तो एक एपीआई जो आपको हेल्प करेगा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये आउट ऑफ द सिलेबस था, मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया कि बैकएंड में भी ऐसा ही काम होता है। और लेट सपोज अगर सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब कि मैंने मान के चलो कि एक वैलिड ईमेल भी डाल दिया, एक वैलिड पासवर्ड भी डाल दिया, और पासवर्ड का लेंथ अगर 8 या 8 से ज़्यादा है, अगर वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो आखिर में मैं एक अलर्ट दे दूंगा। अलर्ट मैं दे दूंगा यहाँ पर, और वहाँ पर दे दूंगा क्या, वेलकम यूजर। ठीक है ना। और लेट्स और चेक करते हैं यहाँ पर क्या होता है। मैंने एक ईमेल ले लिया और पासवर्ड का लेंथ 6 देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। सबमिट करेंगे, देख सकते हो पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। दैट मीन्स हमने पासवर्ड गलत डाला है, 7 8, और दो चीजें ऐड कर देते हैं आप। और सबमिट पे अगर क्लिक करेंगे ना, देख सकते हो वेलकम यूजर। दैट मीन्स हमारा ईमेल भी सही है, पासवर्ड इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट मीन्स आवर जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग. So that is the functionality of your web page that you will achieve using JavaScript. And you have just put the height and width padding. You have removed the border outline using only CSS. So CSS will help you to provide some stylings on your web page. JavaScript will help you to provide some functionality on your web page, and HTML will help you to provide the structure of your web page. Okay. Now let me know in the comment box, guys, have you any question or not? After that, I will give you the attendance form. Please let me know. किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो मुझे, प्लीज लेट मी नो। अगर बूट कैंप अच्छा लगा है आप लोगों को तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सभी को समझ में आया, बताइए एक बार, उसके बाद हम फॉर्म दे देंगे आपको। प्लीज लेट मी नो एवरीवन। एवरीवन प्लीज लेट मी नो, सभी को समझ में आया है या नहीं आया, प्लीज लेट मी नो। ओके, आई थिंक सभी को समझ में आ चुका है। तो चलो, देरी किस बात का, लिंक ले लो भाई, फिलअप कर दो जल्दी से। Okay, link will be opened for next 5 minutes, so I will close the link at 8:10. Okay, password view option, for achieving this functionality you have to add some another क्या है ना, आपको थोड़ा बहुत और जावास्क्रिप्ट ऐड करना पड़ेगा। लाइक अगर आप, दिखाता हूँ मैं तुम्हें, थोड़ा आइडिया देता हूँ। मान के चलो ये तुम्हारा इनपुट का फील्ड है, मतलब पासवर्ड वाला इनपुट का फील्ड। यहाँ पर एक बटन होगा शो पासवर्ड नाम से, ठीक है। अगर तुम इस पर क्लिक करोगे ना, क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट इसका एक रेफरेंस कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करके इसका जो टाइप है ना, इसका टाइप क्या था, पासवर्ड था इसका टाइप, था ना। तो अगर इस पर क्लिक करोगे ना, अगर तुम इस पर क्लिक करोगे तो क्या करेगा, वो इस पासवर्ड को चेंज कर देगा। एक मिनट, इस पासवर्ड को चेंज करके टेक्स्ट कर देगा। और अगर टाइप टेक्स्ट हो जाएगा ना, तो पासवर्ड विजुअल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यही है बेसिक कंसेप्ट। तो अभी इसको अगर चाहो तो तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने वेब पेज पे, तो वो तो अच्छी बात है। हाउ टू शो डेटा इन कंसोल, दैट इज वेरी इजी। क्या है, एक बना लो एक HTML का पेज, उस पर ऐड कर दो एक स्क्रिप्ट टैग, उस पेज को गो लाइव कर दो, तो क्या होगा, ब्राउजर पे वो पेज ओपन हो जाएगा। कंसोल ओपन कर लो इस तरह से, और क्या करो, स्क्रिप्ट टैग के अंदर जाओ,
और कुछ भी लिख सकते हो भाई तुम यहाँ पर अगर चाहो तो, लाइक कंसोल लॉग हेलो। जाओ अपने कंसोल पे तो देखो मैसेज आ चुका है कंसोल पे। समझ में आया अंशिका कि कैसे तुम एक डेटा को कंसोल पे शो कर सकते हो। अदरवाइज तुम कंसोल को ऐसा भी यूज कर सकते हो, लाइक कंसोल, 1 मिनट गाइस, कंसोल डॉट लॉग, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर, हेलो वर्ल्ड, ऐसे भी यूज कर सकते हो कंसोल को तुम। ठीक है ना, समझ में आया सबको कि कैसे हम कंसोल में भी डेटा को शो कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज, आप लोग फॉर्म तो, अच्छा पहली बात बताओ क्या अच्छा लगा ये बूट कैंप, कुछ सीखने को मिला थोड़ा बहुत भी, उसके बाद बताएंगे कि और बूट कैंप्स है या नहीं है। पहले बता दो भाई तो हम भी खुश हो जाए। ठीक है तो और भी मिलेगा। मैं प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम पे क्या दूँ, क्या रिडक्ट दे दूँ या नॉर्मल वेब डेव के ऊपर ही दूँ, आप लोग के ऊपर डिपेंड करेगा। केदार, आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है वेबसाइट लिंक। आपने पूरा का पूरा बूट कैंप अटेंड किया है, करने के बाद आपने समझा है, आपने फॉर्म फिलअप किया है ना, उतना ही काफी है। इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद जो भी देखेंगे जैसे बूट कैंप को, वो भी चाहे तो सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकता है, लेकिन जितना भी कोड हमने लिखा है ना वीएस कोड पे, उनको वो पूरा का पूरा कोड कंपोज करना पड़ेगा, और कंपोज करके हमें भेजना पड़ेगा। उसको हम चेक करेंगे, फिर हम उसका नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर लेंगे और उसको हम सेंड कर देंगे सर्टिफिकेट। और एक और चीज, आप लोग कैसे सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेंगे, वो भी इजी है। टाइप करो कोडेक्स इंटर्न, सबसे पहला वेबसाइट हमारा ही मिलेगा आप लोगों को, बस यहाँ पर क्लिक कर दो और वेरीफाई सर्टिफिकेट एक ऑप्शन है ना, इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट का जो आईडी होगा ना, इसको पेस्ट करके बस सर्च कर दो, तो तुम्हारा जो भी डेटा होगा वो इस पोर्शन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने कोई आईडी नहीं डाला है ना, तो इसलिए कह रहा है कि सर्टिफिकेट आईडी इज रिक्वायर्ड। तो इस तरह से तुम वेरीफाई कर सकते हो अपने सर्टिफिकेट को। ठीक है, और और भी बूट कैंप्स आएगा, पाइथन के ऊपर भी आएगा। ठीक है, बेसिक वेब टेप में भी आएगा, रिएक्ट रिडक्स वो भी देखेंगे। प्लान तो करें कि गिटहब का भी दे हम, गिटहब और डॉकर। और आप लोग का इंटरेस्ट होगा तो हम जेनकिंस भी लाएंगे। ठीक है, not that like if I add a email then I want to show it on console the result। मतलब अंशिका, अगर आप इनपुट के अंदर एक ईमेल को डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो ईमेल कंसोल पे क्लिक शो होना चाहिए ना, बेसिकली सिंपल है। क्या करेंगे आप, 1 मिनट रुक जाओ, दिखाता हूँ। इसको पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, कमेंट आउट कर लेंगे, इन सारी चीज़ों को हम हटा देंगे, इफ ब्लॉक्स को यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ना कि मैंने ईमेल और पासवर्ड दोनों चीज़ का रेफरेंस कलेक्ट करके रखा है। क्या करो, एक कंसोल लॉक कर दो यहाँ पर ईमेल को, सिंपल, और जाओ ब्राउजर पे। 1 मिनट रुको, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अच्छा मोंगो डीबी पे चाहिए, ठीक है वो भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसोल पे गए हम, ईमेल डाल दिया, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखो ईमेल भी कंसोल पे डिस्प्ले होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है अंशिका, समझ में आया, बताओ एक बार।
ऑनलाइन पेड इंटर्नशिप तो डिपेंड करेगा आपके टास्क के ऊपर। देखिए मैंने हम लोगों ने जो भी वर्कशॉप पे आपको सिखाया है ना, वो बेसिक चीजें हमने आपको सिखाया। कि मान के चलो किसी को पता नहीं है कि कैसे काम होता है रिएक्ट पे, तो इसको देख के एक बेसिक आइडिया वो लगा सकता है कि रिएक्ट में ये भी होता है। नॉर्मल HTML CSS को यूज ना करके अगर हम रिएक्ट को यूज करेंगे तो इसका बेनिफिट्स क्या है, वो भी वही हमने दिखाया है। लेकिन उसको अगर आप इम्प्रूव करके देंगे ना, हमने इसीलिए वहां पर कुछ स्टाइल्स ऐड नहीं किया, ठीक है। आप लोग देखोगे ना, बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन हमने बना के दिया है आप लोगों को। कुछ स्टाइल हमने अप्लाई नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि आप लोग खुद वहां पर ऐड करेंगे अपना, थोड़ा बहुत स्किल्स दिखाएंगे वहां पर। दिखाने के बाद आप सबमिट करेंगे। अगर आपका काम हमें पसंद आया तो हम आपको पेड इंटर्नशिप देंगे, क्योंकि हम फ्रीलांस प्रोजेक्ट भी उठाते हैं, कंपनी से भी और वेबसाइट से भी, ठीक है। उसी के बाद ही आपको पेड इंटर्नशिप मिलेगा। और एक और चीज गाइस, 22 तारीख को इंडक्शन सेशन है, जहां पर आप लोगों को बहुत सारा कोर्सेस मिलेगा। नॉट कोर्सेस, इट्स लाइक अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां पर हम आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कोड प्रैक्टिसेस सिखाएंगे, कैसे लिखते हैं बैक एंड फ्रंट एंड, जो भी नया है इस फील्ड में। तो उसके लिए हमने बेसिक वेब डेव भी रखा है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, सब कुछ बेसिक से सिखाएंगे हम 45 डेज में। पाइथन भी होगा वहां पर, ठीक है। तो उसका ब्रोशर आपको कल को डिलीवर कर दिया जाएगा ग्रुप में। और 22 तारीख और उसके बाद भी इंडक्शन सेशन होगा। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड आई विल डेफिनेटली एश्योर यू दैट you will learn something from them, from those training programs, and you can apply those knowledge into your projects. And these projects will definitely add some benefits in your resume, guys. Okay, and we will not give you the assurity that we are providing any job opportunity to you, but we can give you the assurity that we will make you confident for getting a job. Okay, और उसके अलावा जो भी होगा सब भी हम डिस्कस कर लेंगे। और कोर्स प्राइस सबसे पहले बताना चाहिए मुझे, वो है 119, बस इतना ही, उससे ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों का एक दिन का खर्चा, उस खर्चे में आप 45 डेज सीख सकते हो सब कुछ। और जो कोर्स आप बाहर से खरीदोगे ना, तो आपको कम से कम 700 800, कहीं पर भी 2500 1500 इतना देना पड़ेगा आप लोगों को। समझ में आया सभी को? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स गाइस। और आई होप आप लोगों ने फिलअप कर चुके हो अभी तक अटेंडेंस फॉर्म। 15 लोगों ने फिलअप किया, ठीक है। कल तक आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके एवरीवन, course details please, it will be shared in the group, don't worry, and also in your mail ID. Okay, just I will show you some glimpse of the brochure. Okay, just give me a second. Okay, let me open the front end first. Here you can see the screen, right? So it is the basic brochure that we have prepared for you guys. It is for the advanced front end who want to test the technologies like React, Tailwind, Redux, Context API, also the Redux UI, SATCN. This bootcamp is only for them. And here is the context of that training program, like React or Tailwind props, Axios, Context API, Reactor hooks, Redux toolkit, also the React router DOM. And in Mega project, we will use the SATCN and also the Redux UI. Okay. अंशिका, एंगुलर पे बूटकैम्प चाहिए? देखिए अगर हमारे पास वो फैकल्टी नहीं है ना एंगुलर पे, रिएक्ट है, डेटा साइंस का है, एमएल का है, फुल स्टैक का भी है। फुल स्टैक मैं खुद ही करवाता हूँ यहाँ पर। तो आपको हम रिएक्ट दे सकते हैं, लेकिन अभी एंगुलर नहीं दे सकते। इन फ्यूचर हम दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो यही है बेसिक ब्रोश्योर जो आप लोगों को कल मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है। सब सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और बहुतों को डर लगता है बैकएंड से। मैंने देखा है कि फ्रंट एंड से ज्यादा बैकएंड से डर लगता है सबको, लेकिन क्या है ना, अगर आप लोग एक बार बैकएंड कर लोगे ना, तो उससे इजी आपको कुछ भी नहीं लगेगा। बैकएंड बहुत ही इजी होता है, कुछ ज्यादा ई फेल्स से ही काम होता है वहां पर। ठीक है, और मजा तो है बैकएंड में, खुद जब लॉजिक लिखोगे ना, अच्छा फील होगा। Okay guys, if you have any kind of question you can ask me, otherwise I will end the bootcamp. Okay, if you have any question, just let me know guys. I am here to resolve your queries. Please let me know guys. Feel free to ask, don't hesitate, and don't spam in the comment box. Okay, if you spam, then you will be blocked from the chat group. Please let me know guys if you have any questions or not. लगता है किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। Okay guys, and just let me off the form. Okay, thank you all of you for joining into this bootcamp. I hope आप लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा होगा कुछ भी। अगर सीखा होगा तो उसको अप्लाई कीजिए, थोड़ा बहुत चीज़ें इम्प्लीमेंट करिए खुद से, आपको अच्छा भी लगेगा जब आप खुद से करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, एंड very good night to all of you guys, and let's end this bootcamp here. Okay, thank you everyone.